चलो शुरू हो जाओ। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू चार्ट पे चर्चा। बिफोर वी स्टार्ट, आई वुड लाइक टू विश एवरीवन द स्टार्ट ऑफ हैप्पी नवरात्रि, दुर्गा पूजा. Welcome to new experience in the market for the coming expiry as well as October series. We'll be looking at something different. दिख रहा है लास्ट वीकेंड में लॉट ऑफ वो से चाइना का न्यूज़ चल रहा है. एंड आई यू नो विजय, दिस न्यूज़ इज मोस्टली ट्रेंडिंग ऑन इन इंडियन व्हाट्सएप्स और इंडियन हैंडल्स मोस्टली, आई वुड से. अच्छा, ऐसा है क्या? I haven't come across any large media house of world tweeting about it, and हम्म। so I cannot comment on that. अभी तक तो मेरे को कुछ दिखा नहीं है. शायद किसी को दिखा होगा तो I may be wrong. हम्म। But why did this news start exactly after the Friday closing, not before that? देखो कल से नॉन स्टॉप चल रहा है. हम्म। दिस कैन ऑल्सो बी द ट्रैपिंग कि मंडे ये जो मूव चल रहा है उसको मंडे बॉटम आउट करे, साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू. बट लेट अस सी चार्ट्स क्या कह रहा है. लेट अस मूव टू चार्ट्स. यस। जैसा आपने देखा है, इंडिकेशन ऑफ ए बिग मूव, 10% मूव. देर इज ए रीजन फॉर दैट जो अभी चार्ट्स पे दिखेंगे. ये निफ्टी का चार्ट दिख रहा है. यस। या तो ये जो मार्किंग मैंने किया है, ये ट्रेंड लाइन जो दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज द इंपॉर्टेंट रेफरेंस ऑफ 17,300 400 वाला है, जो प्रीवियसली 2 टाइम्स यहाँ से मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया था इन दिस पीरियड इन मार्च 2022, अगेन हियर इन अप्रैल 2022, बैक टू बैक. एंड ऑब्जर्व दिस, यहाँ पे कंसोलिडेट करके इट गॉन टुवर्ड्स 18,100 प्लस एंड इट रिवर्स बैक. एंड दिस इज द सेम हाई विच मार्केट फेल टू क्रॉस राइट नाउ इन द निफ्टी. फिर वहीं पे आके उसके पास यहाँ पे बैक टू बैक वंस, यहाँ पे फिर अगेन इन दिस डाउन मूव टू हियर 3, एंड दिस इज ऑन फ्राइडे 4 टाइम्स बैक टू बैक. यहीं पे मार्केट ट्राई टू गेट डिफेंडेड, यानी स्मार्ट मनी यहाँ पे बाइंग का कोशिश कर रहा था. दिस इज निफ्टी स्पॉट चार्ट. लेट अस मूव टू निफ्टी फ्यूचर. हियर इज द निफ्टी फ्यूचर चार्ट. ऑब्जर्व दिस and observe the volumes in this period back to back over here. In this case एक बड़े मूव आया था, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था बिफोर गोइंग हायर, यानी कि नो मच बिग वॉल्यूम्स. एंड इन दिस फेज अगेन हियर ऑब्जर्व दिस वॉल्यूम्स ओवर हियर, नॉट बिग वॉल्यूम्स. बट आयनिकली यहाँ पे जब भी मार्केट इस टाइम यहाँ पे आ रहा था, वी हैव सीन बिग वॉल्यूम्स. ऑब्जर्व दिस वॉल्यूम्स ओवर हियर. ऐसा क्या है कि यहाँ पे आए कि इस बार वॉल्यूम्स आ रहे थे और पिछले टाइम में नहीं आ रहे थे. ये सब एक दर्शा रहा है कि मार्केट अगर ये वाला फेस डिस्ट्रीब्यूशन बन गया है, देन वी कैन गेट ए मूव ऑल द वे टुवर्ड्स दिस लोज, आई वुड से. बट उसके पहले यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट आएगा 16,400 के पास. बट मोस्ट लाइकली टारगेट इसके यहाँ बनेंगे इफ दिस गिव्स अ ब्रेकडाउन बिलो दिस लाइन. दिस वॉल्यूम बैक टू बैक विल बी गिविंग अप. पिछले 2 टाइम यहाँ पे वॉल्यूम नहीं आया है तो भी अपने को बड़ा मूव मिल गया था. अभी तो वॉल्यूम्स का सपोर्ट है. एंड इन केस दिस लेवल होल्ड्स अप, यानी कि 17,200 गिव एंड टेक 100 पॉइंट से समझो 17,100 150 रेंज वाला जो भी ये लेवल है, यहाँ पे जो बिग वॉल्यूम्स आए थे, till date market hasn't broken below this. Even in this high volumes, index could not break below these levels. So until this 17,150 kind of levels, 17,100, this holds up, ये नहीं देता है breakdown. As long as these buyers defend it, we can be hopeful of we are moving higher towards a 10% upside move. Why 10%? मिनिमम 1500 2000 पॉइंट. अगर मिनिमम 10% का मूव नहीं आ रहा है तो बैक टू बैक इतने वॉल्यूम स्मार्ट मनी को कुछ बेनिफिट नहीं आएगा. अब ये देखिए अगस्त मैंने ट्वीट भी किया था, वी हैव क्लोज्ड, निफ्टी हैज क्लोज्ड बिलो द लोएस्ट लेवल सिंस लास्ट 2 मंथ्स, अगस्त से. यानी 2 महीने से मार्केट एक रेंज में है. अब ये ब्रेकडाउन का इंडिकेशन दिया है फ्राइडे के दिन. एज ऑफ नाउ इट हैज गिवन ए ब्रेकडाउन बिलो दिस 17,400 500 वाला लोअर साइड, 18,000 हायर साइड के रेंज को. बट दिस बिग बायर ऑफ 17,150 एंड दिस गैप डाउन वाला बायर जो भी आया था, दोज आर स्टिल होल्डिंग अप. So once these gives up,
then we can expect a fast downside. And to make a statement, I won't be surprised to see expiry around 16,800, 16,600 zone if 17,100 gives up on Monday close basis. यानी Monday closing में 17,100 अगर break होता है, then have a stop loss of 17,300. Look for the target around 16,800, 600 by expiry. अब क्लोजिंग तक हो सकता है नेगेटिव न्यूज सही आ जाए मॉर्निंग में ही, और वॉट एवर बी द केस एंड मार्केट ड्रिफ्ट बिफोर दैट. सो हाउ डू वी ट्रेड दैट इज लुक फॉर अ 5 minute कैंडल क्लोज बिलो 17,100. यू कैन एंटर अ पोजिशन, हैव अ हाई एज ए स्टॉप लॉस, जो भी हाई बना है. लुक फॉर द टारगेट, अगर क्लोजिंग 100 के ऊपर आ रहा है एग्जिट द पोजिशन, सिंपल. तो फोकस ऑन द लेवल 17,150 इज दिस लेवल एक्चुअली, बट नेगेटिविटी को इतना और वॉलेटिलिटी विक्स बढ़ा हुआ है, बैक टू बैक हाई वॉल्यूम्स थे, एक्सपायरी वीक है, गिविंग ए 50 पॉइंट डिस्काउंट टू दैट. सो वी कैन एक्सपेक्ट some kind of support around 17,100. If that holds closing basis, then we can look for the next move, whether it gives a follow through upside or downside में follow through आ रहा है या रिवर्स मार रहा है. So अगर 17,100 इंट्राडे में डिफेंड कर रहा है, then don't be surprised if we get a पॉजिटिव क्लोज काइंड ऑफ टुमारो इटसेल्फ. एटलीस्ट कल नहीं तो ट्यूसडे के दिन मार्केट रिवर्स दिखने का चांस बहुत ज्यादा रहेगा 17,100 अगर मंडे को डिफरेंट हो रहा है. सो एज ऑफ नाउ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन 17,100, 150 काइंड ऑफ लेवल्स फॉर अ डाउन साइड. इफ दैट गिव्स अप, ये यहाँ पे जो फास्ट मूव आया था, दिस फास्ट मूव wasn't having enough strength in this move compared to earlier move, यानी कि बिकॉज यहाँ पे अच्छा एक्यूमुलेशन वगैरह होके मूव ट्रिगर हुआ था. जब यहाँ पे इतना बाइंग व्हाट वी से जब अप मूव जा रहा है, इतना सप्लायर्स ने यहाँ पे इसको डिस्टर्ब नहीं किया, तो देयर इज हाईली लाइकली कि यहाँ पे बायर्स भी उतना सताएंगे नहीं 16,600 500 तक. 16,600 का ये जो जोन है, these highs around 16,650, 16,500. This is the likely target for the September expiry. If 16,100 gets broken easily, 17,100. 17,000, sorry, 17,100 gets broken easily on a Monday. Timing Monday है. 3 days में 500, 600 points is not a joke, right? वो एक अच्छा opportunity देगा. Expiry week है, monthly expiry है. This is also the quarterly expiry, off-yearly expiry for financial year. And don't forget these options gets open at least 3 months पहले खुलते हैं, and they get active at least 6 months beforehand. So उसका impact भी दिखेगा. So 500, 600 points is not a big ask, but the opportunity lies is you will be getting options at little lesser price compared to जो मंथ स्टार्टिंग में मिलते हैं. यानी अगर 17,100 के पास भी अगर आप देखोगे, कल अगर मंडे के दिन मार्केट फर्स्ट ब्रेकडाउन दिखा रहा है वहां पे, you will be getting 16,800 put somewhere around 2025 is not a big ask for a risk reward which you will be getting. That's the interesting and important opportunity we will be getting if you are alert. रिस्क आपको 20-25 पॉइंट का रिस्क रहेगा. डाउन अपॉर्चुनिटी कितना है? 200-300 पॉइंट आने का चांस है यार. अब 3 डेज में 1:5, 1:10 काइंड ऑफ मूव यू विल बी गेटिंग, प्रोवाइडेड यू आर रेडी टू कैप्चर इट टू टेक दैट माइनर रिस्क. अब इसका मतलब ये नहीं कि आप 10%, 20% कैपिटल से बेट ले लो. सो रिस्क मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट. ऑप्शंस के प्रीमियम फास्ट वैनिश होंगे. एक्सपायरी वीक है, वीक से सॉर्ट ऑफ कूल ऑफ हो सकता है. बी अलर्ट. लेवल 17,100 डाउन साइड में, अपसाइड. नाउ कम द ट्रिक. दिस ब्रेकडाउन आया है, ये ब्रेकडाउन लेवल का कैंडल का हाई है 650, एंड दिस ब्रेकडाउन हैज कम आफ्टर अ फेड पॉलिसी डे. यानी कि फेड पॉलिसी आया थर्सडे, एक्सपायरी के दिन एक्सपायरी गॉट मैनेज्ड एंड देन द रियल सेलिंग हैपेंड. That's why Friday's move hold important. 650, the Friday is high 638. 650 जब तक क्रॉस नहीं करता है, don't get over bullish in a market. Until 650 get crossed, 17,650 downside remains open. ये एक्सपायरी वीक में भले ना आए, बाद में भी ट्रिगर हो सकता है. Focus on volumes. Volume need to cross 1.596 or 1.6 crore to be precise to indicate any kind of some possibility of good reversal. This volume need to get crossed. Market has given breakdown below this candle, this volume expansion candle, and this is also kind of a false breakout over here above 18,000 के ऊपर, जो एक दिन का क्लोज दिया, बाद में रिवर्स मार दिया मार्केट गैप डाउन में. तो दिस फॉल्स ब्रेकआउट का भी इम्पैक्ट आएगा. बी प्रिपेयर्ड. डोंट गेट ओवरली बुलिश until 650 is crossed. So as of now,
व्यू गेट्स क्लियर कि एज अ 17650 जब तक क्रॉस नहीं करता है, व्यू रिमेन्स बायस. If 17100 goes on a Monday, then possibility of 16800 to 16600 near about as a September expiry. That's it from me, Vijay. Over to you. Bank Nifty. Bank Nifty will cover after Elliott Wave. Okay. Okay. This is some other chart. So Nifty 18,000 पे डगमगा गया एंड वीकली कैंडल्स लगातार दो strong red candles बने. Both of them have very long wicks on the upside. That's also kind of follow through to the previous week Yes. move of upside kick मार के back downside आने का. बिल्कुल बिल्कुल. Inverted hammer, you can say. So The bat. this expanding structure के अंदर वापस आ गया है प्राइस. वीकली स्केल पे अभी भी दोनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, बट अगर हम डेली स्केल पे जाते हैं तो प्राइस हैज क्लोज्ड well below 20 and 40 DMA, right? So that is a very negative close. On daily close, something to add, Vijay. Hmm. There is moving average of 100 EMA somewhere around 17100. अभी this is not in your chart. मेरे चार्ट में था. I forgot to talk on that. Okay. 100 EMA is a level which Nifty hits. जो mean reversal वाले मैंने सेमिनार में वर्कशॉप में समझाया था. Okay. उसका डिटेल अभी समझना इजी नहीं है, बट रिमेंबर दिस थिंग, 100 EMA निफ्टी डज नॉट लाइक 100 EMA, यानी उसके पास टिकना पसंद नहीं करेगा मार्केट. या तो फास्ट रिवर्सल आएगा 2-3 दिन के अंदर, या फास्ट डाउन साइड कंटिन्यू हो जाएगा. Continue करें. Okay. सो रिमेंबर दिस थिंग. Yeah, so this black line is 100 DMA, which is 16,700. No, this cannot back in. Yeah, this is weekly. This is daily. 100 DMA. 100 EMA is somewhere around 17,100, I guess. वो EMA होगा, ये DMA है. So much difference between. No, I don't know, देखना पड़ेगा. But this is 100 DMA and the pink line is 200. So अभी तक 200 ऊपर 100 नीचे. हाँ जी. तो देखते हैं क्या होता है. मेरे हिसाब से टॉप इज डन. आई डोंट हैव एनी डाउट्स अबाउट इट, बट वन शुड ऑलवेज कीप एन ओपन माइंड. तो ये एक पैरेलल चैनल बन रहा है. अभी प्राइस उसी के ऊपर टिका हुआ है. तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि if there is any expiry management happening, we get a bounce from this bottom of the channel, go up a little bit, and then उसके बाद होगा जो भी होना है. If I go into the hourly scale, just now I checked, sorry to interrupt, 100 EMA और 100 DMA में बहुत डिफरेंस चल रहा है. दिस इज रेयरली सीन एक्चुअली. बहुत कम टाइम देखने को मिलता है ऐसा, which means market has run up too fast exponentially in a recent move. But if you look at simple moving average, यानी कि क्लोजिंग बेसिस वगैरह और में सिंपल एवरेजेस में इक्वली मार्केट इज लुकिंग फॉर सम कूल ऑफ पीरियड. वो हाईली ओवरबॉट की वजह से चले गया है. दिस हैपेंस व्हेन वी, जैसा ऐसे फास्ट मूव आते हैं तब ये डिफरेंस बहुत ज्यादा दिखता है. बिल्कुल. तो ये जो पूरा अप मूव था फ्रॉम व्हाट इज द डेट, दिस इज अगस्त 29th का ये बॉटम था. ये पूरा ओवरलैपिंग वेव्स थे, राइट. इफ आई गो टू अ सिंपल लाइन चार्ट, यू कैन सी, राइट, ए बी सी डी, एंड उसके बाद ई लग गया ऊपर यहाँ पे. ई बेसिकली फेल शॉर्ट. सो टिपिकल triangle, triangle ending diagonal. This is a diagonal because it's a compressing structure, right? Structure narrow होता जा रहा है, and वहां से काफी क्विक रिवर्सल है. अगर आप देखो, जब भी डायगोनल बनता है वो रिट्रेस बहुत जल्दी होता है. तो ये डायगोनल बनने में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ई तक अगर मैं काउंट करूं 13 दिन लगे हैं इस स्ट्रक्चर को.
और ये पूरा खत्म हो गया, 1 एक दो 2 3 4 तीन 5 चार 6 7. पाँच छः सातवें दिन में खत्म हो गया पूरा। And if Monday, if at all, Monday Nifty opens below this the marked level of 17,150, या जो जहाँ से ये diagonal start हुआ है, this करेक्ट would देन also indicate like a faster reversal. बिल्कुल Faster retracement is like a 17,160। end of the some major wave, right? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो ये है, एंड आप उसमें ये भी देखो कि इन 7 दिनों में एक ऑलमोस्ट 65% का डीप रिट्रेसमेंट भी था, राइट। दिस गेव होप कि ये कहीं बुलिश हो रहा हो, बट ऐसा नहीं था क्योंकि यहाँ पे क्लियरली इम्पल्स दिखता है 1 2 3 4 So this look like a 5। third wave यस, downside. सो एबीसी, एंड ये थर्ड वेव के सब डिविजन से ही है। अच्छा, इसमें Mm-hmm. भी ये मोमेंटम गैदर कर रहा है, अगर आप देखोगे थर्ड के अंदर भी ओवरलैपिंग है, ऑल दीज वेव्स आर ओवरलैपिंग। तो ऐसे समय में ओवरलैपिंग वेव्स के दो पॉसिबिलिटीज होते हैं। एक है व्हाट दे कॉल इज लीडिंग डायगोनल, इट इज आल्सो अ डायगोनल जो प्राइस नैरो करता जाता है, सो ओनली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है यहाँ पे। लीडिंग डायगोनल occurs in the first wave of impulse. So the question is this an leading diagonal which is wave 1 within 3, or this could even be counted as subdivisions? थर्ड के अंदर ये 1 2 1 2 1 2 ऐसा सबडिवाइड होता जा रहा है, which can lead to a extended wave in wave 3. पर दोनों ही possibilities एक ही चीज बताते हैं, even when there is a leading diagonal, the the following wave in that direction is generally very deep. तो अगर ये इतना डीप है, करीब कितना है ये 17,920 से लेके 17,560, राइट, 300-350 पॉइंट का अगर ये डायगोनल है, तो इसका वेव 3 जो है वो उससे भी लंबा होगा। नो, दिस इज व्हाट द वेव Wow. थियरी, हाँ, दिस इज व्हाट द वेव थियरी सेज। सो लुकिंग एट ऑल ऑफ दिस एविडेंस, आई फील दैट द टॉप इज डन, बट लाइक आई सेड, लेट्स कीप एन ओपन माइंड बिकॉज द मार्केट्स हैव नॉट बीन इजी। आई मीन 18,000 इतनी बार दिखाएगा किसी ने नहीं सोचा होगा। और एक ही साल में एक ही और साल में, बैक टू बैक दिखा के, करेक्ट, बट आई एम तीन श्योर चार those पांच who बार। have followed I'm हम्म, sure those who have followed our January video, in हम्म, which we have clearly mentioned this year is going to be a trader's delight. करेक्ट, We will be करेक्ट, getting a 1500 kind of बिल्कुल, points move number of times. और अभी तक देख लो इस साल में बिल्कुल, 5 times तो आ चुके हैं, वन सेट 1500 पॉइंट काइंड ऑफ मूव, और अभी का मूव अगर ट्रिगर हुआ तो दिस विल बी द 6th टाइम। एब्सोल्युटली, किसी ने सोचा एब्सोल्युटली, नहीं होगा, एंड वी वेर बैंग ऑन टू दिस। बिल्कुल। हमने सोचा था, बट हम भी हर बार प्रिपेयर्ड नहीं थे। फॉर एग्जांपल, फॉर मी अगस्त वाज अ टेरिबल मंथ पर्सनली ट्रेडिंग में, जबकि पता था कि वायलेंट मूव्स होंगे ये वो, बट जितना भी हो, इट मेड इट दैट सो वाज बेस्ट फॉर डिफिकल्ट। मी। हाँ, अच्छा, बेस्ट फॉर यू। या फॉर मी इट वाज वेरी टफ, अगस्त वाज वेरी डिफिकल्ट। because I was looking at the only level 16,900 na, the one 1600 was clear, it was a clear upside move. एंड इफ यू सी दीज काइंड ऑफ मूव्स दे थ्रो यू ऑफ। Yeah, इतना this डीप नीचे present गया। हाँ, September was little typical, करेक्ट, ये but बहुत hopefully September ends well, वो कहते हैं ना, all end, if end is well, all is well. करेक्ट, करेक्ट। तो अंत ये जो भला तो सब भला। बिल्कुल 200-300 पॉइंट का गैप अप गैप डाउन मतलब मजाक हो गया मार्केट में। बीटीएसटी वाले के तो बैंड बज रही है। सो आई थिंक पीपल हु आर पोजिशनल इन नेचर, दे विल मेक बिग मनी। जो भी इंट्राडे 1-2 दिन का जो खेल खेल रहे हैं, स्पीड डेटिंग जो कर रहे हैं ना, उनकी तो ट्वेंटी गारंटीड है। ट्वेंटी बिल्कुल, उनकी तो गारंटीड है, वाट लग रही है। एनीवे, कमिंग बैक, इफ दिस इज रियली द टॉप, देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। एंड तुमने जो लेवल्स बताया आनंद, बिल्कुल वही लेवल्स मोर और लेस मेरे भी है एलियट वेव के हिसाब से। लाइक इफ आई डू अ सिंपल figure extension, suppose from here, if I do a figure extension, ये सारे टारगेट्स आते हैं, where if this is 1 and if this is 2, third is almost equal already, बट क्योंकि मैंने इंटरनली दिखाया आपको कि एक वो लीडिंग डायगोनल हो सकता है या सब डिविजन्स हो गए हैं थर्ड के अंदर, तो इट कैन गो टू इवन 1.68 times, which is 16,800. and then we may get a fourth and then fifth. या एंड देन अ लिटिल फोर्थ, जो इस वेव का 38.2% तक हो सकता है, एंड देन अ फिफ्थ, The राइट। fifth can be failure if third get extended.
can be, not necessarily. So Yeah, fifth but fifth there are can be, many हाँ, failure हो सकता है. It can even equal wave one. wave मतलब one. इसका जो लेंथ था वो भी वो कम इफ नहीं है. बाद में तब तक अपना एक हाँ. वीडियो अपडेट आ जाएगा मोस्ट लाइकली, होपफुली, अगर ये सितंबर एक्सपायरी में ना आए टारगेट्स नीचे के. करेक्ट. करेक्ट. अब वो सितंबर एक्सपायरी में अगर 15,600 15,800 या नीचे के टारगेट अगर आ जाते हैं, देन बिल्कुल. वो वीडियो अपडेट नहीं आएगा. वील बी सॉरी फॉर दैट. And I don't know how many of you have noticed it. There were only 2 or 3 stocks जो मार्केट को पुल अप कर रहे थे, एंड वो भी चेंज हो रहे थे. कभी रिलायंस उठा रहा है, कभी आईटीसी को खींच रहे हैं. रिलायंस रिलायंस हार्डली Right? परफॉर्म. नहीं नहीं, अभी नहीं, मतलब 1 महीना पहले फॉर एग्जांपल. सो इन ऑल दिस रिपीटेड विजिट्स टू 18,000, देयर वर अ सर्टेन सेट ऑफ स्टॉक्स व्हिच वर पुलिंग अप निफ्टी, एंड अगले लेग में वो स्टॉक्स नहीं है, कोई और पुल अप कर रहा है. दैट इज व्हाट इज Recent हैपनिंग. 1.5 month, it was purely bank nifty, banks, बिल्कुल. बिल्कुल. and हाँ, ITC, ITC. बिल्कुल. बिल्कुल. तो ये है कहानी निफ्टी को लेकर. डेफिनेटली मेरे को ये इम्पल्सिव स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं लगता है. And I think any breakdown below this low 17,160, it will lay to rest any doubts, all doubts. Uh, it will be 100% confirmation. So ये है, but I would also pay attention to larger indices. For example, ये अगर देखें हम, which is the mid cap index, right? Mid cap index ने actually काफी अच्छा breakout दिया था from this downward sloping expanding pattern. But again, see, very strong red candles. Price is just resting on the 40-day moving average, but very close to breaking down. So इसके ऊपर नजर रखते हैं. Then small cap, right? Small cap, so this is monthly. अब देखो small cap monthly scale पे अगर आप देखोगे तो 20 month moving average के ऊपर गया था, but it got rejected. This is like a gravestone doji जो बोलते हैं, right? So बिल्कुल thin body. Vijay, do you get S&P chart, S&P US 500? I'll show you that also. I'll show you that. Because I अब have अगर आप come across a data point which I do not follow other indices actively. So I have come across a data point in S&P 500 which was shared by me. मेरे को किसी ने शेयर किया. उसमें क्या था कि S&P 500 hasn't closed below 5 moving average on a quarterly chart, 5 EMA on a quarterly chart consecutively, 2 quarters. It has done historically twice or thrice, and one was in 2000 period, other was in 2007-8 period, and both the times index has lost about 50% or more from the top it has made. Wow. And right now, this is the second quarter, it is likely to close below that if S&P 500 does not close above 4,000 by 30th of September. Okay. This will be third instance on a recent history of since 2000. उसके पहले का तो मुझे शेयर नहीं किया गया. So if you look at that way, S&P 500 still has 20-25% to be moving down from the present level. अगर हाई से 50% निकालना है तो अभी तक ये 20% गया है. अभी 20-25% और मिनिमम बाकी है. And real damages happens when the markets normally are in a midpoint or are end of their journey of downside. वहां पे बहुत ज्यादा पेन आता है रिटेल को. तब तक होपफुल रहता है. बिल्कुल. आप डिस्कस कर ही रहे हो तो लेट्स गो टू दैट. If you can get a quarterly chart, that would be double confirmation to our audience. Yes. Just give me a second. This is monthly. Sorry, इसमें quarterly chart आता नहीं है. ये free version है. So you apply 15 EMA on this monthly. This is monthly. EMA 15 EMA. Exponential. So this is 9 EMA. इसको change कर दो. 15 ना. Yeah. 54, 89. This is 15 EMA. ये देखो.
15 month मूविंग एवरेज के नीचे है स्ट्रांगली. बैक टू बैक, दिस इज द सेकंड क्वार्टर एंड यस, हिस्टोरिकली उसके नीचे इफ यू गो बैक इन इवन लुक एट 2020, उसके नीचे एक ही 3 महीने था, बाद में रिवर्स आ गया इमीडिएट. यहाँ पे रिवर्सल इफ है. यू मार्च 2020 इफ यू लुक एट करेक्ट. इमीडिएट अप्रैल में उसके ऊपर क्लोज आ गए है ना. बिल्कुल बिल्कुल. उसके पहले हिस्टोरिकल इफ यू लुक एट इट, सो दिस तो इज यहाँ लाइक टू यहाँ पर भी 2 15 बार ईयर हुआ है, बट ना, यहाँ 15 पे ईयर के नीचे क्लोज नहीं आए हैं, हाँ नॉट हाँ, इवन वंस. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. वो यहाँ पे आया एक बार हाँ, और यहाँ पे आया. एंड रिवर्स्ड बैक. बिल्कुल. So this is the instance where say 2007-8 में आया था and before that पहले आया था, हम्म. and whenever it has happened it was a kind of डीप strong down करेक्शन. move going on. यहाँ पे भी और यहाँ पे भी डीप करेक्शन. करेक्ट. So this is तो validating the point that now there can be something, and even Fed has come clean कि we are likely to raise interest rate to 4.5% kind of, and whatever be the fundamental reasons, but we following the charts are indicating time to be little cautious. Watch out for यस 4000 और S&P 500. तो यार कितना भी डिकपलिंग का थियरी बोल लो, मगर अगर if थियरी होता है. something major happens across the globe, it's यस, not that India won't be अफेक्टेड बाय. unimpacted with it for a longer period, because यार ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड है, आपका एक्सपोर्ट्स भी इतना ही मैटर करता है. बिल्कुल. एंड आईटी के आपके एम्प्लॉय सर्विस सेक्टर इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर. सही कहीं ना कहीं हो सकता है, चलो बाहर 50% जा रहा है तो यहाँ पे 20% 25% जाएगा, मगर यहाँ पे 20-25% में बहुत कुछ हो जाता है, बिकॉज द डेप्थ ऑफ इंडियन मार्केट इज नॉट टू लार्ज कंपेयर टू द यूएस मार्केट्स और अदर डेवलप्ड मार्केट्स. यस. यहाँ पे यार थोड़ा आप क्वांटिटी में थोड़ा सेलिंग करो तो यहाँ पे फ्लैश क्रैश आ जाता है, सो इट इम्पैक्ट्स अ लॉट. करेक्ट. तो डीकपल थियरी को साइड में रखो, चार्ट्स पे फॉलो करो, एसएनपी में 4000 को इम्पोर्टेंट पे देखो, और यहाँ पे 17,150 100 का जो लेवल है, इलेट वेव में इस भी पर उसका ध्यान रखो. ब्रेकडाउन लेवल दिख रहा है, फास्टर रिट्रेसमेंट दिख रहा है, प्राइस में वॉल्यूम का गेन दिख रहा है, सो बी क्वाइट अलर्ट. करेक्ट. तो ये स्मॉल कैप का चार्ट है. while small cap index itself is in a bull phase, क्योंकि वेव 1 सर्कल 2 सर्कल, ये 3 सर्कल का 1 खत्म हुआ है. अब ये 3 सर्कल के 2 के अंदर ही है. पहले लग रहा था कि 2 यहाँ खत्म हो गया है, which is not even 50% retracement of the rise. So it is technically possible that even small cap will make a new low. ठीक है. एंड अगर recent performance अगर आप देखोगे, small cap has not really performed very well. It was actually the bigger stocks performing better. तो हो सकता है कि ये स्मॉल कैप जो है 6500 तक गिरे. So this is another reason why we should not be very bullish. Then let's also look at Nifty 500 just for a second. Nifty 500 निफ्टी against 500 will mostly be निफ्टी 50. हाँ, अगर आप देखो Nifty 500 is behaving very much like Nifty. It is mostly because 90% of Nifty 500 is Nifty 50. एंड यहाँ पे उतना ही है, थोड़ा सा ऊपर गया है. दिस इज सेकंड Right. रेड कैंडल ऑन वीकली स्केल. डेली में तो उल्टा इसने 40 डीएमए के नीचे ब्रेकडाउन एंड क्लोजिंग दे दिया. तो इट इज डेफिनेटली हेडेड टू द 200 डीएमए व्हिच इज अराउंड 14,580. अभी काफी दूर है इसको. सो ये सब नजर में रखना चाहिए. द अदर indicator that I want you guys to look at is India VIX. ये इंडिया विक्स है, वोलेटिलिटी इंडेक्स, मंथली चार्ट है. ये जितना डेटा मेरे पास है, आई थिंक ईयर 2000 से लेकर है, ये ईयर 2009, I'm sorry, ईयर 2009 से लेकर है. दिस इज ऑफ कोर्स द कोविड स्पाइक व्हिच केम वेरी सडनली. बट अगर आप देखोगे मोस्टली ये 2021 और नीचे की तरफ 9 इसके बीच में रहता है. But now slowly it is, inching up, and you will see that it's making, higher lows and constantly यहाँ से लेके from April, May, June, July, August, September, ठीक है. And it is about the 20-month moving average, and it is about to push the 40-month moving average. अगर मैं वीकली स्केल पे देखता हूँ, आपको तो क्लियर ब्रेकआउट भी दिखेगा. Breakout दिखेगा. हाँ. So all in all, important week,
And not to forget, Friday closing is a monthly closing, quarterly बिल्कुल. closing, weekly closing, half yearly closing, whatever you call it. NAV closing, mutual fund के impact रहेंगे इससे, so some kind of action will be seen. And most importantly, October is the 13th month from the top of October 2021, and Indian markets have a history of having some kind of important bottoms in 8th or 13th months normally in a down moves. So Okay. एक बड़ा डाउन मूव आके बॉटम बन सकता है. सो बड़ा डाउन मूव अब 10% आता है, 20% आता है, वी डोंट नो. बी अलर्ट, बायर्स में जल्दी मत आओ अपसाइड के, because it does not matter losing 500 points in a nifty when we are looking for a move of around 1500 2000 plus point. 17,650 के ऊपर टिकता है तो तेजी का सोचो, या नया लेवल अगर आएगा तो वी विल बी डेफिनेटली अपडेटिंग. टिल देन be alert to capture the downside, specifically protect your stocks, investment in a stocks. Sorry, I had to send an urgent message. Okay. तो ये है. Then quickly. One Let's. recap on a bank nifty. 1 second. I'll just spend like a minute on the US indices. SN We'll go down to the daily scale. तो अगर आप daily scale पे देखोगे, this is S&P, right? So there's a huge gap down that it made on Friday, and I think Friday's low is below the earlier low of June. Yeah. So that's not a very good sign. And clearly ये A wave down था, ये B था, which was around 61.8, and this is C wave down. C wave down के अंदर भी अगर मैं इंटरनल काउंट करूँ तो आपको दिखेगा कि ये 1 है, ये 2 है. तो अभी ये थर्ड ऑफ C में है. थर्ड आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा. तो यहाँ की कहानी कुछ ऐसी है. ठीक है. Then if I move to Nasdaq, the tech sector. Sorry, chart is taking time to load here. So Nasdaq में कहानी कुछ इस तरह है. Same. In the weekly chart. Either this is wave 4 finished here, because I have a feeling that Nasdaq में अभी भी एक wave ऊपर की बाकी है. वो चाहे नया हाई बनाए ना बनाए, it can make a failure also. I could be wrong, but when I look at the internal count, ऐसा लग रहा है. But otherwise this could be just be an A wave and a B wave and C wave आने वाला है. A wave का length ये एक बॉक्स है. सेम बॉक्स को अगर replicate किया तो इस green line तक Nasdaq should fall. Around 25%, 30% from the present level. बिल्कुल बिल्कुल. But if this reverses from here, we can also expect reversal in Indian IT stocks, which anyway look very oversold. So IT is the one sector to keep watch on. Yes, IT and also pharma for bullish bets for the coming months. Just 1 second to look at Dow Jones. So Dow Jones में भी कुछ ऐसा ही है. This whole fall has been A wave down, and this was B wave up. This was only 50%, I think. And C wave के अंदर के सब divisions हैं ये सारे. ये देखो ऐसा कुछ दिखता है. You can clearly count 1, 2, 3, 4, 5. ये A, B, C 2 है. This is wave 1 of C, 2 of C, and third में है हम. इसलिए ये gaps जो मिलते हैं typically third violent moves आ रहे हैं. हाँ, तो ये violent moves ही हैं ये. So this also has
quite a bit of distance to cover. The other chart that one should always look at is Dow Jones Transport. ये मैंने अभी जो मैक्रो वीडियो बनाया था उसमें इसकी बात मैंने करी थी. Because Dow theory में clearly mentioned है कि this is the leading indicator for a market breakout or breakdown. अगर Dow Jones Transport ने breakdown दे दिया तो समझो बाकी सब कुछ breakdown देगा. So, on a monthly scale, it has made two big red candles and a low below the June low, right? It is just about to enter this zone, consolidation zone, which could be a support, right? But हो सकता है ये थोड़ा और भी गिरे. This is Dow Jones Transport. And if we look at the FII data, again, इस महीने में already close to 50,000 crores worth of index options इन्होंने खरीदा है. 50,000 crores. Mostly chances of some big move in October. If Very not big in this move. expiry, Very good October move. में आ सकते हैं. Correct. Very So big be move. alert, as this has been already shared previously also regarding the data, Yes. option data. Correct. And if we look at the option profile also, ये भी मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था. Right, this is one way to look at the data. Clearly, 18,000 calls were a big resistance. ठीक है, ये call writing हुई है, looks like that, which is why the market has reversed. And अगर आप देखोगे अगला support जो है यहाँ पे puts जो है ये 17,000 के पास. If this doesn't hold, this assuming that there are puts written here, but if this is not puts written but buying of puts, फिर तो अगला स्टेप 16,500 के आसपास, उससे भी नीचे 15,800 के पास, 900 के पास. 16,000. हाँ, तो वही है कि ये जो अभी अगले हफ्ते में मूव आने वाला है, will it just fill this till here or will it go up is the question. My bet is on the downside. All in all, 17,150 near about as a downside level, 17,650 as an upside level to watch out. Yes. Try to capture the maximum move out of it. Yeah. Hopefully, this is an interesting coverage of different indices with different data points. Hopefully, you will like it. Do share your feedback. Do share with your friends, and do let us know. Would you like to get some kind of different interesting views ahead so that we can carry on? Yeah. This makes a video a little bit longer duration wise, but if you like it, we can continue with it. Else, we can stick to our original of Nifty, Bank Nifty, and little bit stocks also. Hopefully, waiting for your feedback. That's it from us today. Please like करिए, subscribe करिए, and bell icon please दबाइए. And once again, happy Navratri. Yeah, to all of you guys. Enjoy. See you on the next video. Markets year long है. 9 दिन enjoy कीजिए गरबा के लिए, दांडिया के लिए, या यहाँ पे बतकम्मा तेलंगाना में. Every state have their own kind of rituals during these 9 days. Try to enjoy the cultural life. Yes. Thank you once again. Bye.